afternoon. Thanks for joining us here on The Big Story. I'm Afrida Rahman Ali. We are going to, in fact, focus on the ground situation in Uttar Pradesh. 11 districts have come under the grip of the dengue fever. Children are most affected. Dengue outbreak has taken a rather strong grip over districts in western and central Uttar Pradesh. Cases have spread to at least 11 districts across the state. The situation, in fact, is worsening by the day as health infrastructure is now quite overwhelmed, which means there are no beds available, there are shortage of doctors and also shortage of blood, where people are now clamoring for platelets. Firozabad district has been the worst affected. It continues to see a major spike in dengue cases. Ballia has seen 25% rise in the number of cases in the past 10 days, while Etawah has reported over 5,000 cases in the past 1 month. Several districts have stepped up measures to fight the outbreak. Muradabad will conduct door-to-door survey starting tomorrow. So it is a situation of a crisis there in Uttar Pradesh, where death toll is also rising. Firozabad alone reporting over 50 deaths. Ayushman is reporting from Firozabad, that happens to be the epicenter of this outbreak. Ayushman, first of all, coming to you. Okay, Ayushman is going to be connected with us in just a bit. Important part here is that questions are being raised now on the management of this crisis, on why is the health infrastructure getting overwhelmed in this manner, where there are no beds. People are being overcharged by private hospitals. That's another major issue that is being faced on the ground. Of course, it always happens that there are unscrupulous elements exploiting the helplessness of poor patients. It's happening once again. There is also quackery. Quacks have emerged because of the absence of actual doctors. People are resorting to all kinds of other methods, and that's only aggravating the problem, because here is something that needs immediate attention. The spread of the disease, of this epidemic, must be arrested with immediate effect. 11 districts coming under its grip: Lucknow, Mathura, Etawah and Firozabad being the epicenter. The important part again, of course, is that this has exposed the crumbling health infrastructure, where the state has failed to sustain a seasonal outbreak of dengue, an epidemic disease which happens every year with the onset of monsoon. There should have been enough preparedness to deal with this. Ayushman is joining us from Firozabad. Yes, Ayushman, on ground, what do you see happening around you? Because we are getting reports that people are now getting desperate for beds. Government hospitals are not able to cater to the poor patients. So how are people managing under such circumstances? Well, Afrida, right now I'm in the outskirts of Firozabad. This is the street number 6 in Anand Nagar is this area called. And this is, unfortunately, this is one area where you can see, if my camera person can show you, the kind of measures that need to be taken after the dengue outbreak. Unfortunately, is not being reflected on ground, because you can see those sewer lines and also the places where the cow and the buffaloes have been tied there. This is the Anand Nagar area. This entire village, this entire stretch that you're seeing, and my camera person is showing you right now, is something that the entire stretch, entire street has at least one person. In each houses, at least one person has got dengue. In fact, I'll try and speak to all those people who are here with us to know what it is like to live in such a horrific environment. Madam, आपके बच्चे को अभी कहाँ एडमिट कराया आपने? क्या हालत है उनकी? माया देवी। हालत तो सही है, थोड़ा पेट में दर्द बता रहा है अभी। सरकारी अस्पताल में एडमिट है, प्राइवेट में एडमिट है? कितना खर्चा हो रहा है? प्राइवेट है, 5,000 को रोज को खर्चा है। 5,000? हाँ, हर रोज को खर्चा है। हाँ। क्या कह रहे हैं वहाँ पे? पहले पैसे जमा करने को कह रहे हैं। क्या है सरकारी स्थिति, क्या है सरकारी अस्पताल? सरकारी अस्पताल में गए तो वहाँ कोई ट्रीटमेंट हुआ था नहीं, और फिर दो ढाई बजे तक बैठे रहे। फिर हम मनते भागे, फाइल आए कुछ सब बना के रख ली थी कि अब तुम बैठो, अभी डॉक्टर आ रहे, जो आ रहे, वहाँ कोई नहीं आया। वहाँ से हम बच्चा को लेके भागे आए। बच्चा हमारा ज़्यादा परेशान था। यहाँ पर क्या, ये जो नाली हम देख रहे हैं, खुली नाली है, थोड़ा सा कचरा भी बाहर आ गया, सफाई वगैरह करते हैं? ये तो सफाई का चूना करते हैं, हम पे आप खुद लेकर आते हैं। हमारी गली में तो कोई आता ही ना है बिल्कुल।
और पैसा क्या है, बाकी जो घर हैं यहाँ करीब करीब सभी जगहों पे स्थिति, सभी के घरों में डेंगू के घर में डेंगू सभी के घर में फैलो है, कोई ऐसा ना है सो सही हो, सब परेशान है और गरीब आदमी है, कहाँ से पैसा लामे, कोई सरकार द्वारा कछु मदद ना मिल रही कैसी। Afrida, if I can also speak to people who have lost their relatives, because this is a family who actually lost a 14-year-old due to dengue, and we'll try and speak to them also. किस तरीके से वहाँ जब ट्रीटमेंट आपने कराया, बहुत मशक्कत हुई, आयुष्मान कार्ड था आपके पास, फिर भी इलाज नहीं हो पाया, क्या हुआ था? हमारे बच्चे को डेंगू हुआ था। 30 तारीख को योगी जी आए थे, तीनों बच्चे मैंने सरकारी अस्पताल में भर्ती कराए 100 सैया बेड पर, लेकिन जब तक योगी जी रहे तब तक ट्रीटमेंट सही हुआ। उसके बाद योगी जी के जाने के बाद उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करना बंद कर दिया। इस वजह से हमने अपने बच्चे को वहाँ से ले जाके आगरा दिखाया। आगरा दिखाने पूरा बताएं। हाँ, यहाँ से ले जाके मैंने शांति नर्सिंग होम में भर्ती कराया। एक दिन वहाँ गुजरने के बाद हमारे बच्चे को 2 तो सही हो गए, एक को रेफ़र कर दिया आगरा के लिए। पूरे फिरोजाबाद में कहीं भी मुझे जगह नहीं मिली किसी वैसे सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में। इस वजह से मुझे एफएस कॉलेज तक गया। इसके बाद मैं आशीर्वाद हॉस्पिटल आगरा में इलाज कराया। वहाँ हमारे 1 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे वेंटिलेटर की, बच्चे के लिए वेंटिलेटर की ज़रूरत है। हमारे पास पैसे नहीं थे। वो कह रहे थे 20,000 पर डे का खर्चा है वेंटिलेटर का, उसके बाद दवाइयाँ और हॉस्पिटल का खर्चा। मैंने कहा हमारे बच्चे के पास आयुष्मान कार्ड है, इससे इलाज कर दीजिए। तो उन्होंने जब पता करा पुष्पांजलि हॉस्पिटल में और कृष्णा में, तो कहा इससे आयुष्मान कार्ड से जो है केवल 20-25 हज़ार का इलाज हो सकता है। उस कार्ड पर हुआ नहीं इलाज? उस कार्ड पर इलाज हुआ नहीं। इसके बाद मैं अपने बच्चे को बाद में फिर फिरोजाबाद सरकारी हॉस्पिटल 100 सैया वाले अस्पताल में लेके आया। वहाँ पर मुख्य सचिव आए हुए थे, उस दिन इलाज किया और जैसे ही मुख्य सचिव गए उनके बाद जाने के बाद तुरंत ही उन्होंने इलाज बंद कर दिया। और सुबह 4:30 बजे के लगभग हमारा बच्चा बोलता था, पहचानता था, नाम लेके पुकारता था। पानी भी मांगा उसने और पानी पिलाने के लिए 10 ml की सरंज मांगी मैंने अस्पताल में, लेकिन उन्होंने कहा हमारे पास 10 ml की सरंज नहीं है और आप क्या कही जाते हैं खुद पानी पिलाओगे। तो मैंने कहा आप नहीं पिलाएंगे तो हमको तो पिलाना ही पड़ेगा। लेकिन सुबह पता नहीं वो जल गए क्या बात, सुबह होते होते हम सब लोगों को बाहर कर दिया, हमारे जो साथी थे। और उसके बाद पता नहीं उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया। कि हमारे बच्चे को जी हंसता खेलता बोलता हुआ और उसकी जान ले ली। और सुबह उन्हें 6:41 हमको बाहर कर दिया अस्पताल से। उनकी मृत्यु हो गई वहाँ पर। अभी जो व्यवस्था, क्योंकि आपके यहाँ 3 बच्चे थे, उन सबको डेंगू हो गया था, अब वो लोग कैसे हैं बाकी के 2? बाकी के 2 बच्चे अभी तो ठीक हैं। उसके बाद की साफ सफाई क्या यहाँ कुछ इलाके में साफ सफाई कुछ हो पाई है, होती है, क्या होता है? यहाँ जब कोई घटना घटित हो जाती है उसी दिन सफाई होती है। उसके बाद तो क्या किया जाते हैं उसी गली में होगी या दूसरी गली में, फिर वो और होती नहीं है। सफाई होनी है तो पूरे मोहल्ले में होनी चाहिए, जा सके दूसरी गली के मच्छर यहाँ दोबारा ना आ सकें। और मेरी प्रार्थना है सरकार से कि जो अधिकारी जो है, जब तक शासन के लोग आते हैं उसी टाइम इलाज करते, उसके बाद इलाज उसी समय पर कर दिया जाता। जैसे ही वो पीठ फेरते यहाँ से जाते उसी में इलाज बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। इस कारण लापरवाही से बच्चों की मौत होती है। हमारे बच्चे की तो मौत हो ही चुकी है, लेकिन बाकी जो अस्पताल में भर्ती हैं उनके साथ न्याय अच्छा होना चाहिए और इलाज भी उनका होना चाहिए। हमारा चला गया तो चला जाने से, लेकिन दूसरे के बच्चे की जान नहीं जानी चाहिए। That's the unfortunate reality that we are seeing right now in Firozabad, Afrida, where we are standing right now. Almost all the houses have got at least one person or maybe more than that suffering from dengue. And this is the outskirts of Firozabad. We have been told that 52 children and 52 deaths have occurred so far. And this is street number 6, where almost every house has got at least one person suffering from dengue, and they are admitted either in the government hospital or the private one. Thank you so much, Ayushman, for bringing us voices of those people who are affected by this. It's heartrending to hear their stories indeed. Let me introduce Sanjay Chaudhary, spokesperson of the BJP, joining us, and Dr. Ravi Malik, director of Radix Hospital, former secretary of IMA.
Good afternoon, gentlemen. Thanks for joining us. Sanjay Chaudhary, you heard the ground report. You heard Ayushman talking to people on the ground. My question to you is that if you look at the reasons that are being cited by most people who you also just heard, one of the things being said is that doctors did not show up. The other issue is that the open drains never been cleaned. The third issue being said is no assistance coming from the government. And also what we heard is that only when the chief minister visits, when there is a VVIP visit, there is instant cleanliness, there is instant attendance of doctors. But after the VVIPs leave, then it's back to the same old story. What I want to understand from you, Sanjay Chaudhary, is that whenever you have a municipality election, when you have a local body election, a panchayat election, जब इलेक्शन का टाइम होता है तो वोट मांगने के लिए कितना कुछ आपका पार्टी जो है करते हैं जमीन पर, लेकिन अब लोगों को क्या अपने हालत पे छोड़ दिया गया है वहां पे? नहीं, लोगों को हालत को नहीं छोड़ा गया है। जैसे ही ये सबसे पहले तो वहाँ जो चीफ मेडिकल ऑफिसर थे वो थोड़ा इफेक्टिव नहीं थे और उन्हीं के कारण ऐसा लगता है कि ये समस्या ज्यादा फैल गई। और जैसे ही ये इंफॉर्मेशन आई गवर्नमेंट के पास तो चीफ मिनिस्टर खुद वहां पर गए थे, फिरोजाबाद गए थे। और उसके बाद सेंटर के डॉक्टर्स की टीम और स्टेट डॉक्टर्स के एक्सपर्ट्स की टीम फिरोजाबाद में है। और जो सीएमओ थे उन सीएमओ को हटाकर उनकी जगह दूसरे सीएमओ को लाया गया है। आपको पता है कि 35 बच्चों की मौत हो चुकी है फिरोजाबाद में। चीफ मिनिस्टर का वहां पहुंचना ना पहुंचने से क्या फर्क पड़ा है? बिकॉज अभी जो हमने सुना, सिर्फ उस टाइम पे लोग हाजिर हो जाते हैं, साफ सफाई भी हो जाता है, उसके बाद लोगों को कोई नहीं देखते। यही आपने सुना, अभी हमने रिपोर्टर ने बात की अभी कुछ लोगों से फिरोजाबाद से ही। वो जो बात कर रहे थे तो मैं आपको आप उनसे बात कर सकते हैं कि ये जो 40 बच्चों की मौत के बाद वहां पर इस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल का एक ऑफिसर लगातार एक हफ्ते से वहीं पर है और वो उसको सुपरवाइज कर रहा है। जो डेथ रेट है वो लगातार गिर रही है। अभी जो वहां पर ये जो डिजीज फैल रही है उसके लिए एक्सपर्ट की टीम आई है और इसका पैटर्न क्या है, इसके पैटर्न को भी ऑब्जर्व किया जा रहा है कि इसको कहां से इसको रोका जा सकता है। अभी उनका एक सजेशन था कि एक स्पेशल टाइप की एक मछली होती है जो इसके लार्वा को खा जाती है। वो उसको भी वहां के ऐसे तालाबों में जो तालाबों के किनारे ये बस्तियां हैं जहां इस तरह के लार्वा बहुत ज्यादा है, उनको भी वहां कल काफी संख्या में डाला गया है। तो केमिकल का भी यूज हो रहा है और ऐसे जो और भी जो मेथड्स है जिससे इस लार्वा को कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर भी काम हो रही है। और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज की कंट्रोल की एक टीम भी वहां पहुंच गई है जो इस पैटर्न को देख रही है। और बरसात के सीजन में इस तरह की थोड़ी मुझे एक्चुअली आप जो पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो वहाँ के प्रिंसिपल और डीन है जो स्टेट मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद की, उनका ये कहना है कि देयर इज नथिंग मिस्टीरियस अबाउट दिस इन्फेक्शन। कोई अलग पैटर्न नहीं है। दिस इज डेंगू एंड लेप्टोस्पिरोसिस एंड स्क्रब टाइफस confirmed in samples sent from Firozabad, Mathura and adjoining districts. So let me come to you on this, Dr. Ravi Malik. We may hear all these other kind of theories, but what is the reality? I mean, is this a seasonal flu? Why is Uttar Pradesh only affected, and why are children getting impacted so highly, Doctor? Look, it is simple. It is dengue fever. As I have seen in the media reports, it is the dengue fever, and Firozabad alone has lost more than 51 lives. It is a serious issue. And I must tell you, dengue fever is a potentially life-threatening illness, and we should work on both the verticals. One is the preventable vertical, and the other is the vertical for the treatment. So in the prevention vertical, the government should, in letter and spirit, immediately impose all the public health policies like they should release the gambusia fish, which this gentleman is talking. They should do fogging, and there should not be any kind of collection of water for more than 1 week because the larva it multiplies in the water only. So all these measures should be taken, and it is simple. Unless it is dengue, it is preventable. We can prevent it, but the way the numbers are escalating and we are getting avalanche of patients, and since it is a life-threatening illness, we need to have proper number of beds, blood banks, because minded that even blood products, platelets and fresh frozen plasma is required in the treatment of dengue fever.
So we need to be extremely careful, and the government needs to be absolutely Yes. vigilant in providing the curative services to the people. यस संजय चौधरी जी, प्रिवेंटेबल है डेंगू, इसका मतलब यह है कि अगर सरकार ने टाइम से अगर प्रिवेंटिव मेजर्स लिए होते, अगर साफ सफाई होता, इस तरह से स्प्रेड नहीं होता। जो पैटर्न की बात आप कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, पैटर्न इसमें सिर्फ ये दिख रहा है कि ये यूपी में हो रहा है, रूरल एरियाज में ये ज़्यादा हो रहा है जहाँ पे साफ सफाई नहीं होता। आपने सुना हमारे जो रिपोर्टर थे वो बात कर रहे थे, तो वहाँ जो एक महिला थी वो कह रही थी कि कोई जो ड्रेन्स जो है उसको कभी साफ नहीं किया जाता है। इसका मतलब यह है कि दिस इज समथिंग दैट इज अलाउड टू फेस्टर। स्टैग्नेंट वाटर में होता है इस तरह का ब्रीडिंग। तो ये इस चीज को लेके क्या आपके सरकार, आर दे अवेयर, आर दे डूइंग देयर बिट? नहीं, उसी दिन से, जिस दिन से ये समाचार आए थे, दरअसल पहले जो जानकारी मिली थी उसके हिसाब से ये था कि बच्चों में कोविड की तीसरी लहर आने की बात थी। तो इसीलिए सरकार ने पूरी मुस्तैदी के साथ सारे एक्सपर्ट्स को वहां भेजा, और प्राइमरी रिपोर्ट जब ये आ गई कि इसमें कोविड का कोई इसमें लक्षण नहीं दिख रहे हैं, और सरकार ने फिर डेंगू के ऊपर कंट्रोल करने के लिए जो भी मेजर्स सरकार को जो सामने नजर आए और जो भी एक्सपर्ट्स ने बताए, वो मैं आपको, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि उन मछलियों को भी उसके लिए डाला गया और उसके ऊपर केमिकल्स का छिड़काव भी किया गया। सफाई पर भी काम हो रही है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वहां का जो अर्बन डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, हेल्थ का डिपार्टमेंट है, वो पूरी मुस्तैदी के साथ उस पर काम कर रहा है, और इसका असर आप ये देखने को आपको मिलेगा। और मुझे लगता है कि आपके करस्पॉन्डेंट भी नहीं, ये आप डैमेज कंट्रोल की बात कर रहे हैं। अभी जो आप कह रहे हैं ना, ये जो आउटब्रेक होने के बाद क्या कर रहे हैं उस पे आप हमें बता रहे हैं, लेकिन हम पूछ रहे थे कि आपसे जो प्रिवेंटिव करना था, जो सरकार का दायित्व था, उसमें द गवर्नमेंट हैज फेल्ड। क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट को देख लीजिए किस तरह से यूपी में होता है। कोई प्रायोरिटी है सीवेज डिस्पोजल में, वेस्ट मैनेजमेंट में कोई अवेयरनेस है? स्वच्छ भारत सिर्फ एक स्लोगन बन के रह गया है वहां पे। स्लोगन नहीं बन के रह गया। देखिए, बरसात में इस तरह की घटनाएं तो होती हैं, सफाई पर भी काम हो रहा है, और इसका असर आप देख रहे हैं कि उसके बाद डेथ रेट लगातार डिक्लाइन है, वो गिर रही है। इसका मतलब है कि वहां पर जो काम हो रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है, और सरकार की मशीनरी, वो चाहे सेंटर की हो चाहे वो स्टेट की हो। अभी फिर से आप वही अभी जो हो रहा है वो बता रहे, कभी वहां पे एंटी फॉगिंग ड्राइव नहीं हुए। लेट मी हैव डॉक्टर रवि एक्सप्लेन टू अस. Dr. Ravi, since you mentioned that this is preventable, do you think that if there were measures like anti-fogging, anti-dengue fogging that was done, would that be an effective measure? Even now going forward, what are the steps that the government needs to immediately take in order to ensure that the spread of this epidemic is arrested? The government can work on both the verticals. One is the preventable vertical, where the government should make it sure that there is no logging of water on the streets, in the government buildings or otherwise. Secondly, they can do the fogging to kill the mosquitoes. Thirdly, they can apply the, they can put in oil on the water surfaces that will kill the viruses. They can use the fish, fishes also, which eat up the larva, which this gentleman has already told us. So these are all the things which the government should do at the preventive, on the preventive aspect. But along with that, even door-to-door campaign should be done. Even door-to-door, they should also check which patient is having dengue, and they should try to isolate that. Even public should also completely wear the complete clothes. They should completely cover all their body parts so that there is no chance that a mosquito bites over there. If the mosquito doesn't bite, then you cannot get dengue fever. Now, on the other side, the government should work on the other vertical also, that is providing the beds in the ICUs, increasing the number of ICUs, increasing the number of doctors in those 11 districts of UP where the dengue is there. They should move doctors over there and paramedical staff. They should increase the blood banks and should see that the availability of blood and blood products is there. So that is on the curative side. So on both the aspects, and I must tell you, in fact, talking about blood banks, Dr. Ravi, there is a huge crisis, and I would like to play out one of the ground reports we have filed by my colleague Ayushman. Let's look at the situation when it comes to what people are going through when it comes to the requirement of blood. Let's listen in.
Right now, I am in the government hospital. This is a 100 Shayya department, which means 100-bedded hospital department is there. You can see this queue. This is the line which people are standing here, and we have been here present for over 1 hour. But this length of the queue hasn't decreased much ever since we have come here. In fact, we'll try and talk to them to know क्या हो रहा है यहाँ पे. अभी आप लोग यहाँ पे कितनी देर से खड़े हैं? क्या हो रहा है? यहाँ रिपोर्ट लेने के लिए खड़े हैं। सुबह का सैंपल दिया है, सुबह अर्ली मॉर्निंग बहुत जल्दी सैंपल दे दिया, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आई और रिपोर्ट ना आने की वजह से सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा। बच्चे को बुखार, उल्टी, दस्त, बुखार। ये कब से हो रहा है? क्या बोला है? 15-20 दिन तब बुखार ना जा रहा। सर, जितना अभी आप इलाज कर पा रहे हैं, उसमें क्या दिख रहा है? मूलतः बड़ा रीज़न एडमिशन का क्या है सर? देखिए, ज़्यादातर यहाँ जो जल जनित बीमारियाँ आ रही हैं, जल जनित का मतलब जब भी बरसात होती है तो बरसात के टाइम में ये ज़्यादातर बीमारियाँ बरसात से रिलेटेड, क्योंकि बरसात में जो गड्ढे होते हैं वो भर जाते हैं, जो हमारा जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जो बीच बीच में मट्टी का गैप होता है वहाँ भी पानी भर जाता है, तो ज़्यादातर मच्छर बाहर आ जाते हैं। तो मच्छर के माध्यम से जैसे कि डेंगू 25% केस में डेंगू निकल रहा है। क्योंकि जिस तरीके केसेस आ रहे हैं, बच्चों का जो हॉस्पिटल में एडमिशन है उसका प्रेशर कितना है अभी? इस समय लगभग 4 से 83 बच्चे भर्ती हैं हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ 6 से बेड की व्यवस्था कर ली है। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और हम लोगों को निर्देश दे गए, हमारे जिलाधिकारी ने बहुत मेहनत की है और उनके और हमारी प्रिंसिपल के सहयोग से हम लोगों ने 6 से बेड कर लिए हैं। पहले जो समस्या एक बेड पर 2-2 लेटी थे, वो अब समस्या खत्म हो गई है। Yes, but Dr. Ravi, please finish the point that you were making about this. The fact that, this happens, of course, seasonally at a time after the rains, and we heard about the waterlogging issue. Is stagnant water a main problem, the main breeding ground for this, or are there other factors also equally responsible? It is basically the stagnant water which is the breeding ground. If there is no stagnation of water, the mosquito cannot survive. So it is very important and very clear. Secondly, we should take further measures to avoid the bite of the mosquito on the human body. So we should cover all our body parts, especially those which are below the knee and below the elbow, because generally Aedes mosquito bites below the knee and below the elbow. So that is also extremely important, and we should follow what I will like to say, the dengue appropriate behavior. Secondly, in last 2 decades, we have seen whenever the rainy season comes, the dengue outbreak is there. In most of there has been exceptional years when there has not been dengue outbreak all over the country. So it is very important for the governments also to understand that the moment rainy season comes, they should be absolutely vigilant about it, and they should be able to control the situation. As a pediatrician, I can tell you, dengue is especially more serious in small children. So it is very important for us to protect our children also. And as a hospital owner, I can tell you, generally we should get the report within 2 hours, like the people are standing in queues and they are giving their blood samples. Maybe tomorrow the report will come. The report should come within 2 hours, and the initial treatment should be started as early as possible, because dengue fever, we can control the mortality, we can control the death rate if timely we start with the medication and everything. So once the disease goes down the spiral, then it is very difficult for us to save the child. That is so important, Dr. Ravi. Thank you for saying this. And Mr. Sanjay Chaudhary is also hearing you. Timely treatment, वो जो golden hour होता है, जो the first few hours after the child gets fever, if immediate treatment is given, a child can be saved, a life can be saved. And that is why we are raising this issue again and again, that we need to work on our health infrastructure. In states like Uttar Pradesh, we cannot lose young children to a seasonal flu like dengue in this manner. Over 40 kids have died in Firozabad alone, and that is absolutely inexcusable if it has happened because of state laxity. Thanks for joining us, Sanjay Chaudhary and Dr. Ravi Malik, for giving us your time.